Question number 1, exercise 1.2, prove that under root 5 is irrational. Okay, so like the previous sums, we will start with an assumption over here. Okay, we will assume that root 5 is rational number. So when we are assuming it as a rational number, know that root 5 can be written in the form of P upon Q. Therefore, root 5 is equal to P upon Q. P and Q are co-primes and Q is not equal to 0. Okay. Now, the next step is under root 5 Q is equal to P. हमने Q को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और P is equal to under root 5 into Q. Okay. Now, taking square on both the sides, what do we get? We get it as P square is equal to 5 into Q square, squaring the sides, both sides. Okay. When P square is equal to 5Q square, this would imply that Q square is divisible by 5 and Q is also divisible by 5. Also divisible by 5. Okay. P and Q now have 5 as a common factor. Okay. Therefore, P and Q now have 5 as a common factor. Okay. जब 5 ये कॉमन फैक्टर आएगा तो जो हमारा एजम्पशन है कि बोथ आर को प्राइम्स वो गलत हो गया. बट वी एज्यूम्ड P and Q are co-primes. Okay. Hence, root 5 cannot be expressed in form of P by Q and therefore root 5 is a irrational number. Is a irrational Question number 2. Prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational. Okay. So again, we'll start with an assumption. Let 3 plus 2 root 5 be a rational number. We are saying that we would be able to express it in the form of P upon Q. Let 3 plus 2 root 5 be a rational number. Okay. Therefore, 3 plus 2 root 5 is equal to P upon Q. Okay. So, अब ये जब 3 plus 2 root 5 is equal to P upon Q लिख दिया है हमने, we can also write it as 2 root 5 is equal to P upon Q minus 3. Okay. And root 5 is equal to 1 upon 2 into P upon Q minus 3. ये क्यों आया? Because जो यहाँ पे ये 2 था हम उसको ही इस तरफ लेके आ गए. यहाँ मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे हमने 2 को डिवाइड कर दिया. ओके. नाउ P and Q are integers. वो तो हमारा assumption ही है. ओके. ओके. So 1 upon 2 into P upon Q minus 3 is a rational number. Now what we have done is, in this equation, in this particular equation, हमने क्या किया है? हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको प्रूव कर दिया कि ये रैशनल है. ओके. सो उससे क्या होगा? ये जो रूट 5 है वो भी रैशनल हो जाएगा बिकॉज वो राइट हैंड साइड में है. ओके. सो अब जब रूट 5 हमने रैशनल बना दिया बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है तो हमारा राइट हैंड साइड भी रैशनल बन गया. तो रूट 5 भी रैशनल नंबर बन जाता है.
but then this contradicts the fact that root 5 is irrational. Because it contradicts our fact, we may conclude that 3 plus 2 root 5 is a irrational number. Therefore, this is also rational. Okay. So, we are contradicting our fact, and hence we conclude that hence 3 plus 2 root 5 is a irrational number. Question number 3. Prove that following numbers are irrational. So, the first sum is 1 upon under root 2. Okay. So, previous sums की तरह यहाँ पे भी हम एक assumption लेंगे. Let 1 upon under root 2 be a rational number. Okay. So, when 1 upon under root 2 is a rational number, we can write as 1 upon under root 2 is equal to P upon Q. ये हमने previous sums में already देख लिया है, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes. Okay. And P and Q are integers, which are co-prime integers. Okay. And Q is not 0. So, we can also write it as root 2 is equal to Q upon P. रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका, जो 1 upon root 2 is equal to P upon Q था, हमने रेसिप्रोकल ले लिया. Okay. But we know that P by Q is a rational number as P and Q are integers. But we know that. But P by Q is a rational number as P and Q are integers. Okay, so ये वाली साइड ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा Q upon P. अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, रूट 2 भी रैशनल नंबर हो गया. सो देयरफॉर रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. ओके, सो ये जो रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, वो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे एक फैक्ट का. ओके, विच इज फॉल्स. ओके, विच इज फॉल्स, एंड देयरफॉर 1 upon root 2 is irrational. Sum number 2, 7 under root 5. Previous sums की तरह यहां पे भी हम assumption लेंगे. Let 7 under root 5 be a rational number. Okay. When this is a when 7 under root 5 is a rational number, 7 under root 5 can be written as P upon Q, where P and Q are co-primes and Q is not equal to 0. Okay. So, अब ये क्या बन जाएगा? This would become root 5 is equal to P upon 7Q. 7 वहां न्यूमरेटर में था, हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके. सो रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q. ओके, P अपॉन 7Q इज अ रैशनल नंबर. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर. ओके, जब हम एक रैशनल नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही रहेगा. सो व्हेन P अपॉन 7Q इज अ रैशनल नंबर, दिस इंप्लाइज दैट रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ओके, विच इज फॉल्स. ओके, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 7 under root 5 is a irrational number. Therefore, 7 under root 5 is a irrational number. Sum number 3,
6 plus under root 2 is irrational करना है. So we will start with the assumption that let 6 plus under root 2 is a rational number. So like every other rational number, this can be expressed as P upon Q. So 6 plus under root 2 is equal to P upon Q. Okay. And root 2 is equal to P upon Q minus 6. Okay. So since P और Q इंटीजर्स हैं, हमने 6 उसमें से रिमूव किया, तो ये जो एक पार्ट बना है लेफ्ट हैंड साइड का, ये हमारा एक रैशनल नंबर ही बन गया. ओके. अब ये रैशनल नंबर है, तो रूट 2 ये भी एक रैशनल नंबर हो गया. देयरफॉर अंडर रूट 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, विच इज फॉल्स. ओके. सो हमारा जो एक एजम्पशन था कि 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, हमने वो प्रूव करने की कोशिश किया. ओके. बट फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया, उसमें हम लोग रूट 2 को भी रैशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं, which is a contradiction to our fact, which is a false statement. Therefore 6 plus under root 2 is a irrational number. Therefore 6 plus under root 2 is a irrational number.